कितने की एवरेज है इनकी? 55 की, 60 की, ज्यादा की होती है। आपको पता सारे आंकड़े। ऑरेंज कैप के हकदार थे और इस साल भी उसकी ओर अक्सर हो रहे हैं किंग कोहली। और ये इन्हें अलग क्या बनाता है, एक बल्लेबाज 50 रन बनाकर आउट होकर चला जाता है और ये अंत तक आउट नहीं होते हैं चेज करते वक्त, खासकर ये खास बात है किंग कोहली की। एक 115 पर एक्सटीरियर पेंटिंग। हाँ सुपर ब्रो। कौन सा पेंट? नया बिरला ओपस। अरे वो हर बार वाला लगाना था ना यार। सर नया बिरला ओपस पेंट्स देता है 16 साल तक की वारंटी। हर बार वाला लगाना था, हर बार वाला। इनको जमाने से पीछे चलने दो, आप चुनो नया बिरला ओपस पेंट्स। ये जश्न है, जश्न का ये जश्न है। राष्ट्रीय इलायची जश्न का जश्न। सबसे बड़ी राइवलरी अब हो गई और बड़ी, मिस मत करना। मुंबई इंडियंस के साथ विराट कोहली स्ट्राइक पर। शॉट ये भी अच्छा है लेकिन रन यहां पे भी एक ही मिलेगा। मैच में बहुत आगे निकल गई है आरसीबी की टीम। हालांकि अगर वैसे देखें यहां पर तो बराबरी पे चल रहा है, वीरू पर बराबर है नहीं ना ये, क्योंकि इसके बाद कोलकाता वो एलिवेटर पे बैठे ही नहीं और ये टीम जो है ये बहुत आगे ऑलरेडी भाग चुकी है। बिल्कुल विकेट बहुत खो दिए थे कोलकाता ने। ये देखिए केवल 59 रन बनाए थे, मतलब 58 रन बनाए थे। यहाँ सर 9 ओवर पड़े हुए थे और विकेटें भी हाथ में थी। जैसे ही सुनील नारायण आउट हुए, फिर उसके बाद अजिंक्य रहाणे, फिर एक के बाद एक आउट होते चले गए। केवल 58 रन बनाकर 175 रन का टारगेट दिया था। वो गलती आरसीबी नहीं करेगी। कल शाम को दूसरा मुकाबला है चेन्नई वर्सेस मुंबई एट चेपॉक। देखिए वो आज की प्रैक्टिस की शॉट्स है जिसमें तैयारी की जा रही है। एक बार फिर वो हथियारों को तैयार किया जा रहा है कि चलिए हेलीकॉप्टर उड़ाएं, स्टैंडों में उसको डिलीवर करवाएं। बड़ा मैच होगा ये। चेन्नई मुंबई हमेशा बड़े ही मैच होते हैं। स्टार स्पोर्ट्स 2 पे आएगा ये मैच। पीछे फील्डर है मौजूद और रमनदीप के हाथ में अगर गेंद जाए तो फिर निकल ना पाए। देवदत्त पाटिकल की पारियां होती है समाप्त सुनील नारायण की गेंदबाजी के चलते। यहाँ प्रयास किया था बड़ा शॉट मारने का कि रन गति को तेजी से आगे बढ़ाते ही चले जाए। अंदरूनी किनारा जिसके चलते पकड़े गए बाउंड्री लाइन के जस्ट थोड़ा सा अंदर। वहां रमनदीप जैसे आकाश ने कहा ये छोड़ते नहीं है कैच। प्रयास बढ़िया था वहां पे। 10 बनाए, 118 पे 2। It's hard to come to terms with a violent nature. We'll get your hands on somebody, huh? Maybe a little bit scared. Scared about what that means. Retribution is the closest any of us will ever get to justice. कप्तान रजत पाटीदार आए हैं बल्लेबाजी के लिए। वैसे एक वो पहला मैच है तो रणनीति आप देखते हैं कौन कहां बैटिंग करेगा। क्या रजत खुद 3 पे आएंगे? पर आए नहीं। सीनियर पार्टनर भी हैं, पूर्व कप्तान भी हैं, तो बता रहे होंगे कि भैया क्या एक्सपेक्टेशन है आपसे। यहां पर 12वां ओवर होता है समाप्त। अरे सर ये क्या कर रहे हैं आप?
इंडिया को पहली बार सिर्फ एक मिस्ड कॉल से गोल्ड लोन बुक करवाऊं। गोल्ड लोन बुक सिर्फ एक मिस कॉल से? फर्स्ट टाइम इन इंडिया गोल्ड लोन ले इजीली। मुथूट फिनकॉर्प बुक माई गोल्ड लोन के साथ कहीं भी कभी भी बुक योर गोल्ड लोन टुडे। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ गुलें तो जी लग जाए। विमल बोलो जुबान कैसे। और अच्छा था हर्षित राणा का। और अतिरिक्त उछाल मिलता है गति के साथ। इस करते रहेंगे। कट लगाने का प्रयास था रजत पाटीदार का, थोड़ा बीट हुए पेस से, अतिरिक्त उछाल से। सीजन बैट के साथ बहुत अच्छा था, इतना अच्छा कि आरसीबी ने कहा कि इस फेज के लिए, इस साल के लिए कप्तानी भी करेंगे। इस टीम की कमान सौंपी है रजत पाटीदार को, एक बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन पिछले ओवर में पारी समाप्त हुई देवदत्त पाडिक्कल की। हवाई फायर लगाना चाहते थे, दम तोड़ दिया गेंद ने लॉन्ग ऑन पे। जिम्मेदारी कोई बुरी चीज नहीं। अगर किसी को भी आप जिम्मेदारी देते हो तो वो उन्नति और प्रगति की तरफ बढ़ता है, अग्रसर होता है। कई बार आप नालायक बच्चे को भी मॉनिटर बना दो ना तो वो लायक बन जाता है। तो उत्तरदायित्व मुझे लगता है योग्यता और शक्ति के साथ साथ चलता है, और योग्यता उनमें थी, शक्ति प्रदान की है गुरु। मैं इतना नालायक था कि मुझे मॉनिटर भी नहीं बनाया गया था। शिखर धवन कमेंट्री डेब्यू पे ऑन फायर। कभी कभी ऐसे भी नालायक आ जाते हैं। जो खुद को नालायक कहता है उससे लायक बच्चा कोई होता ही। खुद पे हंसना ये बहुत बड़ी बात है। मैं अपनी तारीफ खुद से करता हूँ, अच्छा लगा तो मैंने कहा थोड़ा बेइज्जती करूँ ताकि आप वहां से तारीफ करें। ये भी एक कला है पाजी। देखो अपने मुंह से शादी मुबारक तो हर कोई करता है, अपने मुंह से मुंह मियां मिट्ठू भी हर कोई बनता है, लेकिन इस वक्त आरसीबी पूरे कंट्रोल में है। जिस तरह के दाव उन्होंने फेंके, पाडिक्कल को इस तरह से भेजा। I think you can change it after 11, but I'd imagine it's got to be wet enough. You can't just say, sorry, I don't like this ball. No, I don't think that's the rule. I think the fielding team has the right, if they so choose, after 11 overs of the second half of the match, to request one ball change in the evening games. But what about the 15th over then? If you change after the 11th, you can then talk to the umpire, and if the umpire believes it's again become very wet, then it's entirely up to the umpire to then change the ball. So you could get a second dry ball coming in after the 16th over. We saw the impact of a dry ball at the end in one of the CSK games where Dhoni was hitting the ball, had hit a ball right out of the stadium, a wet ball. I think Yash Dayal might have been the bowler. Got a dry ball, got the ball to grip a little and produce the miss hit. .49, Virat Kohli. .50 for Virat Kohli. Even here in Eden Gardens, the bastion of KKR, they're chanting Kohli, Kohli. Well, it's special, isn't it? It's special that we're fortunate enough in this period to watch them roll gold, absolutely roll gold. Just the way that he can manipulate, rotate, strike. He's won everything bar the IPL. World Cups, not World Test Championships, but certainly given themselves a chance. Border Gavaskar trophies. The IPL is something that's missing for number 18 in the 18th year. I'm sure that's going to be a narrative for the rest of this tournament. Is that something that's possible? RCB are slow out of the blocks, but you can come back in this tournament like they did last year.
And even Kohli, the way that he's gone about this innings is something very special. End of the over, it's 127 for 2. अरे सर, ये क्या कर रहे हैं आप? इंडिया को पहली बार सिर्फ एक मिस्ड कॉल से गोल्ड लोन बुक करवाऊं। गोल्ड लोन बुक सिर्फ एक मिस कॉल से? फर्स्ट टाइम इन इंडिया गोल्ड लोन ले इजीली। मुथूट फिनकॉर्प बुक माई गोल्ड लोन के साथ कहीं भी कभी भी बुक योर गोल्ड लोन टुडे। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ खुलें तो जी लग जाए। विमल बोलो जुबान कैसे? The biggest rivalry gets bigger than ever. Don't miss. Big contests such as this one. How dramatically the game turned in the second half towards RCB. The tempo at which he scored in the power play and now outside of the power play, with a strike rate approaching 171, 175, so far has been as eye-catching as the strokes that he's played. Another eye catcher, this time from Patidar. He's a magnificent player of spin. And he's hit that long and timed it beautifully. That's huge, absolutely massive. Got to be over 90. Gets it right in his slot. What these guys, Ian Bishop, what they do so regularly now is they just cast fear aside, cast the scoreboard aside, and just get into their stroke zones. If it's in their zone, gone. Simple as that. And I think a lot of that has to do with just how many hours they spend getting their range. We'll go back to Kohli. I think for a lot of years, RCB have destructed around Virat Kohli's performance, rather than as a team work out how it is that they're going to win this tournament. They've worked out, and Kohli's worked out, that he's a seasoned campaigner in IPL cricket. He just scores hundreds and hundreds of runs every year, 1,000 tonight against this team alone. But these last 2 years there's been a shift in Virat Kohli. Strike rate of over 150 last year was important for RCB to set the platform. Now this season, just on 170. Now again, really important, because the benchmarks have lifted, have gone from 180 to 200 plus. The last 14 times on this venue, 12 alone have been scored 200 plus. Single to complete the over, 11 off it. It's 138 for 2. ये दिल दिमाग डेटा का गेम है. Start Sports Trading on Sports Bazi. This game may be habit forming or financially risky. Play responsibly. The end's coming. The deviants. We were meant to stop them. What is that thing? Eternals assemble. Great line. You can't protect them. Let's finish this. Left arm spinner and keep Kohli quiet because he doesn't sweep. That changed last year. I don't know how accurate the numbers are. I read them. 22 sweep shots produced 63 runs for him last year. And as a result, it opened out mid-wicket for him because he kept sweeping. So it opened out mid-wicket. And the big change in these last 2 years, the numbers that you see, are predominantly because of the way he's played spin. This is going to sound like a ludicrous argument from me, but it's almost like Virat Kohli has been too good for RCB. That he's just distracted the other batting unit because of his just supremacy in this tournament. Oh, just over. He's come out playing shots here, Rajat Patidar.
They're running towards his target there. They're not inching towards it, they're running towards it. And I like that because it's the first game of season 18. But we often talk about net run rate. You put yourself in a position to win the game from game one. You win the game as quickly as you can because you know come playoffs, somebody more than likely is going to get eliminated based on net run rate. Come on, Archer. What have you got? I'm just wondering why it took 34.2 overs for Bish to get there. I'm with you. Placed beautifully by Patidar. He's looking in control. I'll tell you what though, Ian Bishop, he may sound like a broken record on this point, but every year bar none, it always comes back to net run rate. So you're right. If RCB don't want to be bridesmaids again in this tournament, these little things, they might be 0.5%. But what we're suggesting and what Ian Bishop continues to reinforce every season of the IPL is this point. I wasn't sure anybody was listening. I led you into a secret. I was about to say net run rate just as well Bish did. Oh, good run to save it. From Vaibhav Arora, I'll tell you what, we've been talking about Kohli, but this man Patidar is looking in very good touch. Had a fabulous domestic season. Right, the Rupe on the go, fours of the match, celebrating the boundary hitters on that leaderboard as they lead in fours. Rupe leads and rewards, and Phil Salt is up and running with 9. Rahane with 6. Kohli 4, Raghuvanshi 2. Sunil Narayan got 5-2. 8 sixes for the Knight Riders, 6 for the Royal Challengers. It's the boundaries that are almost equal at this stage, the fours that is. Oh, he might have found the gap again. It was here that he first told the world, come look at me as an uncapped player. And got 100 in an eliminator. His guru sits in the other camp as coach of KKR.
as possible. It's a good catch.